Hello students, welcome back to our e-class of St. Joseph's Academy. Class 1, Subject Mathematics, and the topic we will be studying today is Review Worksheet 8, Part 2. Students, we have already discussed Review Worksheet 1, Part 1. In that worksheet, I have discussed question number 1, question number 2, and question number 3. Today, we will be discussing the rest of the questions, that is question number 4, question number 5 and question number 6. In our class, we will be doing a little bit of revision of what we did yesterday and then we will move forward with our review worksheet. Students, review worksheet is nothing but it is the combined worksheet of all the topics we have studied earlier. So, we will have a recap of all the topics we will be discussing today. I am Anukriti Gupta, your mathematics teacher, will be guiding you for today's worksheet. Let us now start with our today's part. Students, as I said, that we will be starting off with revision of previous day. So, what we did yesterday. Can anyone tell me that what was the topic we discussed yesterday? Anyone? Yes, you are correct. We discussed review worksheet, but what was the topic? Can you tell me the topic, students? Okay, we discussed long form. Very good. Yes. Okay, so today, some of you answered that we discussed long form, some of you answered we discussed countings. So there were 3 questions. One was of long form, second was of countings, and third one was of patterns. As you can see on the screen, we have all the 3 topics and I gave 2 parts of each to you as your homework. Students, मैंने कल आपको कुछ होमवर्क भी दिया था. So I think this is very easy to do it by yourself. ये बहुत easy था आपका खुद का करने के लिए. बट अगर आप कहीं भी कंफ्यूज होते हैं, second question, that is in long form and the number names, you can mention it in the comment section also. Also, we will be discussing it as a different topic. हम इसे different topic की तरह भी discuss करने वाले हैं. So do not worry. हम long form को 1, 2, 3 times बार revise करेंगे. So do not worry that you are unable to understand any of the things. आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा at the end of our revision session. Not today, but the whole session. जब हमारे सारे revisions हो जाएंगे. So students, yesterday we discussed counting. Question 1 was you have to write the counting from 151 to 160. ये हमारे कल का question था. तो हमने 160 तक counting रखी थी, which is very easy for you as you know the countings up to 200 now. जो हमने 200 तक काउंटिंग पढ़ ली है तो आपके लिए बहुत इजी है 151 से 160 तक काउंटिंग्स लिखना. नंबर 2, राइट इन लॉन्ग फॉर्म एंड ऑल्सो राइट द नंबर नेम्स. लॉन्ग फॉर्म में लिखना. लॉन्ग फॉर्म हमने आपको कल बताया था, जैसे कि यू हैव टू ब्रेक द नंबर इनटू लॉन्ग फॉर्म. लाइक इफ यू हैव one sentence in the number, so you will be breaking it into 2 parts. If you have hundreds in the number, then you will be dividing it into, breaking it into 3 parts. जैसे कि 136 C पार्ट है, इसमें
100 भी आ रहा है, 30 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, जो कि अलग अलग वंस, टेंस और हंड्रेड्स प्लेस पे हैं। सो सबसे पहले हम हंड्रेड्स प्लेस से लेंगे जो कि 1 है। सो इट इज 1, सो वी विल राइट 100 प्लस टेंस प्लेस पे आपका 3 है, देन वी विल राइट 3 विद 0 बिकॉज इट इज अ टेंस प्लेस, क्योंकि वो टेंस प्लेस पे तो हम 0 के साथ 3 लिखेंगे। 30 प्लस 6, वंस प्लेस पे 6 है तो 6 लिखेंगे। सो योर number name for C part will be 136. And third question is carry on the pattern 163. Then we have skipped one number which is 164 and we have written 165. Then 166 skip हुआ है, 167, then 168 skip हुआ है, 169. ऐसे numbers आपके skip होते चले गए हैं. So हमने इस pattern को continue किया है और complete किया है एक एक number छोड़ छोड़ के. You can see 169 के बाद we have not written 170. हमने 171 लिखा है, फिर हमने 172 नहीं लिखा, 173 लिखा है. ऐसे ही हमने नंबर्स को और सीरीज को कंप्लीट किया है. सो दिस वाज आवर 3 टॉपिक्स वी डिस्कस्ड यस्टरडे. अगर आप कल की क्लास मिस कर चुके थे तो यू कैन गो बैक टू द previous video or yesterday's video. You will get to know all the things in detail. And today also we will be discussing question number 4, question number 5 and question number 6 of the same worksheet. Let us now start with the topics we will be covering today. So students, here is your understanding that what we will be discussing in our further class. अब हम आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम एडिशन के लिए बात करते हैं. एडिशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द टोटल और सम बाय कंबाइनिंग ऑफ टू नंबर्स, digits and values. हम इसको छोड़ देते हैं. What we read is just the definition part, but now we will be understanding it. I know you have already done it in your books and copies. आप addition कर चुके हैं, addition with carry भी कर चुके हैं. So by now you all know addition very well. But though it is a revision only, but I will be discussing the whole process of carry and addition again, so that आपको कोई भी confusion आगे future में नहीं हो and you are able to do it very well. राइट. सो एडिशन बेसिकली हम वन साइड से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी मूव ऑन टू 10 साइड. एडिशन होता है दो चीजों को कंबाइन करना, जोड़ना. एंड व्हेन वी कंबाइन टू और मोर नंबर्स, किसी भी दो चीजों को जोड़ना, दो से ज्यादा चीजों को जोड़ना, या हम उससे ज्यादा चीजों को जोड़ते हैं या कंबाइन करते हैं, देन व्हाट वी गेट इन मैथ्स, जब मैथ्स में हमें कोई आंसर मिलता है, वी कॉल इट एज सम. वी when we combine or add two or more numbers, the answer we get is known as sum in addition. So we will be practicing addition now. Also we will be doing subtraction. What is subtraction? It is the reduction of a number from another number, या फिर किसी चीज में से कुछ भी घटाना, उसको हम बोलते हैं subtraction. So you can see subtraction जो होता है वो भी हमेशा वन साइड से स्टार्ट होता है. वी स्टार्ट फ्रॉम वंस एंड देन वी गो टू टेंस. वन से स्टार्ट होता है देन हम उसे टेंस पे करते हैं. सो जब सब्ट्रैक्शन का हमारे पास जो आंसर आएगा और जो एडिशन का आएगा, दैट विल बी डिफरेंट एंड द प्रोसीजर इज टोटली डिफरेंट. एडिशन मीन्स जोड़ना, दैट मीन्स वी आर एडिंग अप थिंग्स. सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना, वी आर डिडक्टिंग थिंग्स. And the next thing we will be covering today in our sixth question is clock. So I will be discussing clock again today. So let us have a look at clock now. So this is a clock, students. You can see it is at your home also. आपके घर पे भी होगी, wall clock होगी. This is a clock. The shape may be different. इसकी shape अलग अलग आती हैं, square आती हैं, oval आती है. The shapes are different, है ना. Shapes सबकी अलग होती हैं, but the structure is the same. कि उसमें नंबर्स सेम आते हैं, 12 तक ही आते हैं, 1 से लेकर के. वी हैव 3 निडल्स. इसमें जो सेकंड्स की एक और निडल होती है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस और ड्रॉ the seconds needle. We will be only be discussing the short hand, which is the hour hand, and the long hand, which is the minute hand. You can see here short hand, blue one.
शॉर्ट हैंड ये आवर हैंड होती है. आवर मीन्स जो घंटा बताती है हमें किसी भी नंबर पे अगर ये होती है तो दैट इज द आवर. देन लॉन्ग हैंड विच इज द मिनट हैंड, ये हमें मिनट्स बताती है. ये जिस भी नंबर पे होती है वी कैलकुलेट द मिनट्स अकॉर्डिंग टू दैट. I have also discussed that on number one we complete 5 minutes. So we we go on like five ones are five, five twos are 10. Two pe we complete 10 minutes. Then on three we complete 15 minutes. Then on four we complete 20 minutes. Likewise we complete the whole circle. And on 12 we consider it as 0 0. Although it is 60 minutes, 60 minutes complete करती है, but we consider it at 0 0 and we always start it from 1. फिर यहाँ पे जो छोटी छोटी डॉट्स होती है 1 2 3 4 minutes, then 1 पे 5 minutes, then 5 6 7 8, then 9, and then 2 पे 10 minutes. So likewise we move for the minutes hand also. So this topic is very much clear to you, as I could see in the class also and here also you were responding so well. So I will be asking you questions now on the worksheet. You will be doing it, some of the question you will be doing it by your own. Let us have a look at review worksheet 8 part 2. This is your question number 4, 5 and 6. So let us now discuss question number 4 first. This is add. So we will be adding A part and B part. C, D and E part are your homework. You have to try it yourself. We will be discussing the answers tomorrow for sure. C, D और E part का हम answers discuss करेंगे कल. बट आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे. आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डिफिकल्टी आएगी, कोई भी डाउट होगा, यू कैन आस्क मी. देन ए पार्ट इज 51 plus 9. So we start from one side. 1 plus 9. Students, what is the answer of 1 plus 9? Yes, you can also add 9 plus 1. Very good. Yes, what is 9 plus 1? It is 10. Okay, so 10 जब हमने लिखा, when we are writing 10, so the ones in 10 which is 0, we will be writing it here, and the tens part of 10 which is 1, we will be writing it here in the कैरी फॉर्मेट. उसको हमने कैरी कर दिया, 10 के 1 को कैरी कर दिया और 0 को नीचे लिख दिया. जो भी कैरी में हम लिखते हैं वो वंस का पार्ट हम नीचे लिखते हैं और टेंस का पार्ट हम हमेशा कैरी करते हैं टेंस में. नाउ वी हैव 5. 5 के नीचे there is no number below 5, so we will be writing 5 as it is, but we are having 1 as carry, so we will be adding 5 plus 1. Very good, you are so quick students. 5 plus 1 is 6. So our final answer, or we can say sum, is 60. 60. Our final sum is 60. All right. Now we move on to B part, which is 16 plus 16. We will be doing the same procedure. 6 plus 6, 12. 12 का 2 यहाँ because it is at ones place, and 1 यहाँ because it is at tens place, and we will be carrying 1 in the tens only. Now we will be adding 1 plus 1, which is 2. Then we will be adding the carrying part also, which is 2 plus 1 is 3. So our final sum is 32. Very good. So now we have C, D and E part as our homework. The procedure is same, students. Let us now come to fifth part, which is subtraction. We will be starting off with 25 minus 7. So students, we all know that we cannot deduct a bigger number from a smaller number. हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटा नहीं सकते हैं. If you are having 5 pencil and I ask you for 7, you won't be able to give me. मतलब अगर मैंने आपके पास 5 pencil और मैम ने आपसे बोला आप मुझे 7 दे दो, then you won't be able to give me. आप नहीं दे पाओगे because you are having only 5. Then in that case what you will be doing, you can borrow it from someone else. आप किसी और से borrow कर सकते हो और मुझे दे सकते हो, right? So we are following the same format.
यहाँ पे 5 में से 7 नहीं जा सकता, तो 5 ने बोरो किया है 2 से। जब 5 ने बोरो किया 2 से, तो 2 थे, 2 के पास तो 1 ही रह गया। एंड देन वी हैव वी हैव बोरोड 1, 1 यहाँ पे हमने लिखा तो इट बिकम्स 15, 1 5 15 बन गया। जब हम 1 को 5 के आगे लिखेंगे तो वो हमेशा 15 बन जाएगा। सो 15 में से हमने जब 7, यू कैन माइनस 15 माइनस 7। प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ 15 माइनस 7। Yes, students, you can tell me. Yes, very good. Okay, 15 minus 7 is? Yes, 8. So we will be writing 8 in the answer side. And then here it is left, we are left with 1 only. यहाँ पे 1 बचा है और 1 में से हमें कुछ भी डिडक्ट नहीं करना है. So we will copy down 1 as it is. Answer is 18. Similarly, we will be doing in B part, 98 minus 9. So in ones we have 8 minus 9. अब 8 में से 9 नहीं जा सकता, so we will be doing 8 as 18, and 18 में से 9 गया, 9 बचा। 18 कैसे बना? क्योंकि हमने 9 में से 1 कैरी ले लिया। जब हमने 9 में से 1 कैरी लिया, then it is we are left with 8 only, क्योंकि एक हमने यहाँ पे दे दिया है 1, so we are left with 8. Now we will be doing the tens part, which is 8, और नीचे हमारा कुछ भी नहीं लिखा है, so we cannot subtract anything. We are subtracting 0 from 8. 8 में से 0 माइनस करेंगे तो 8 ही आएगा. Then answer is 89. You will be following the same procedure for C, D and E part, and we will be discussing the answer for sure tomorrow. Okay, we come to 6th question. Draw the hands to show the time. हमें hands draw करने हैं time show करने के लिए. What is the time given? Time is 10. So 10 means जो dot से पहले होता है that is the hour, and after that column we are having minutes. So minutes is 00 and hour is 10. So our hand जो कि छोटी hand होती है, we will be drawing it towards 10. Then minutes 00. So I just now recall that at 00 means we are having the minute hand at 12. 12 पे 00 होता है, so minute hand will be at 12. Coming to B part, it is written 6 o'clock. So it is the universal thing that at 6 o'clock the line will be straight. At 12 o'clock you can see only one, the longer hand, because the shorter hand is behind the longer hand. So anyways, we will be discussing 6 o'clock now. 6 o'clock means it is complete 6. नो मिनट्स. जब कोई भी मिनट्स नहीं है, कंप्लीट 6 है, तो मीन्स मिनट हैंड 12 पे आ गया, विच इज एट 00. 6 मीन्स द आवर हैंड, so our hand is at 6. Students, draw this very neatly and carefully. The hour hand needs to be short and the minute hand needs to be long. Hour hand हमेशा short होना चाहिए और minute hand हमेशा long ही होना चाहिए, and it should be neat and clean. Do not erase it again and again. Rather, you can draw it once after practicing it in your copy. Clear? Similarly, you will be doing C and D part. 1 o'clock means 1 is your hour hand, shorter hand. 8 means 8 is your hour hand, that is shorter hand. Okay. So this is all we had for today. We will be discussing your homework now. Your homework is practice the given worksheet in your maths copy. You have to solve this copy in your maths copy. You have to solve this worksheet in your maths copy. Why you have to solve this in your maths copy? Because here you are looking at the answers as well. So when you will be writing the questions in your copy, you can solve it by yourself. जब आप खुद से करेंगे तो answers आप खुद से solve कर पाएंगे उसमें, and it will be very easy for you to understand and do it by yourself. Do not take anybody's help. If you need any help, please do let me know of the same. Thank you, students, for listening to me very carefully. Have a nice day.